फास्टेस्ट क्रिकेट स्कोर अपडेट्स या सबसे डिटेल्ड स्टैट्स, क्रिकेट के अंदर बाहर की खबरें या हेल्दी डिबेट्स, सबसे एक्यूरेट एनालिसिस या फैंस का क्रेज, सबके लिए एक ही प्लेटफॉर्म, क्योंकि क्रिकेट मतलब क्रिकेट नेक्स्ट। Hello and welcome to Cricket Next. मैं हूं सौम्य कपूर and India and England are all set to take on each other in the third test in Rajkot. Less than 24 hours to go. इंडिया को कुछ चेंजेस करने पड़े हैं, कुछ फोर्स चेंजेस करने पड़े हैं ड्यू टू द अनअवेलेबिलिटी ऑफ विराट कोहली and injury concerns to KL Rahul. Well, to talk more about this, I have with me K. Srinivas Rao, Vineet Ramakrishnan, Taus Rizvi and Animesh Nath to talk about the batting combination. Welcome to Cricket Next, everyone. Shrini, I'll start with you. It seems to be a transitional phase. So finally, that the Team India is going through. Debut देखने को मिल सकते हैं, कुछ players जिनके brief careers रहे हैं, they'll be part of that middle order. What do you have to say? Post transitions. Transitions hai, but not natural transitions. Post transitions, should they click? Obviously, it's going to be a boon in disguise for Indian cricket because the way I've tracked Indian cricket over the last 3 years, I've realized that transition is one word that has ceased to exist in their dictionary. They really don't know what it means and how to go about with it. So if something like this, what we're going to start, what we're going to watch in the test match starting tomorrow, if it leads to any kind of success, it is going to be a shot in the arm, a boon in disguise for this BCCI. And yes, I am looking at certain youngsters being given an opportunity, and rightly so, because there couldn't have been a better time. You are out of number 4, number 5, number 6. These three are out Yes. right now, and you really don't have a choice but to bring in fresh legs, and that's why I said Rajat Patidar made an impression in the second test match in Visakhapatnam, and I see the other guy who was picked at that time, Yep. Sarfaraz Khan, Yep. again kind of making his face. Now, what I want to see is what do they do with Devdutt Padikkal? Yeah. You've picked up Devdutt Padikkal. What was that magic vision that came into your mind? On what basis did you pick him? How exactly are you going to use him? Is something that I would like to kind of see. Yeah. And all said and done, yeah, the choice is between, the way I see it, the choice is between Aksar and Kuldeep. And again, I don't think I have to think too much. If we're packing ourselves as batsmen, then Aksar is the guy who sits. Yeah. Okay, I'll come to the bowling bit a bit Yeah. later. But Vineet, there are ऐसा होता है कई बार कि जब आपको opportunities ऐसे ही मिलती हैं. You don't have the senior players in the 11 in the squad. Opportunity for Rajat Patidar to stamp his authority. He looked good in the first game, but now is the time to stamp authority. And if there is a debut for Sarfaraz / Dhruv, again an opportunity for both of them to showcase the talent. What do you have to say? You're on mute, Vineet. You're on mute. Yeah, of course, as Srini mentioned, it's a forced transition, and transition is never smooth. Like, it's very, very rare that you see in any, for any team, that transition is kind of smooth. There's always question marks, over new players coming in, or the, so-called senior players, you let go of. But this here, it is forced transition, and as you rightly said, Rajat Patidar, it's a great opportunity for him. He has toiled hard in the domestic circuit, and Yep. when you get these kind of opportunities, you have to grab it with both your hands. And the first innings, he showed that he belongs to this level with that composed 32. It was not fluent or anything, but it was composed. I mean, the way he Yeah. was facing up to somebody like a James Anderson, and the kind of time that he had to negotiate James Anderson, that really told you that this guy is built for at this level. So it's a great opportunity for him. We were discussing this. I think it was the same panel we were discussing. What of Rajat Patidar if Virat Kohli or a KL Rahul comes back for the third test. Rajat Patidar unfortunately would have to miss out. But that is not the case now. Rajat Patidar will definitely get his opportunity, and a great opportunity for him. Rajkot would be the most flattest of the wickets in the series Yeah. that
these guys are going to play on. So fantastic opportunity for Patidar, even better opportunity for somebody like a Sarfaraz Khan. What happens is that it's the kind of opportunity or the kind of time that you get your debut in. Remember Prithvi Shaw, right? He made that Yeah, 2018 yeah. debut. All stars were aligned for him. He was a very weak West Indies attack, again a very flat track. He just Hmm. ransacked that West Indies team and got off to a maiden 100. Something of that sort. I can see, sense that Sarfaraz Khan would be able to get. I mean, a flat track. He Taos would be better equipped to Hmm. tell you. I don't want to use that word, a flat track bully, but he is that way. A bully. When it comes to batting, he'll go. He'll Yeah, go. He'll be aggressive, and if yeah, he gets that kind of an opportunity, he is not going yeah, to, let go of a Tom Hartley or a Rian Ahmed. He is going to punish him. So bodes really well for somebody like a Sarfaraz Khan. Much yeah. awaited debut, but a debut not really under testing circumstances or under Hmm. testing conditions. So that Hmm. way, I mean, very very tough for somebody like Sarfaraz Khan getting an opportunity like this. The third name that you mentioned about Dhruv Jurel, it is looking likelier that Jurel will get the nod ahead of Shrikar Bharat. But I would, as I have taken the stance that I would definitely give one more chance to Shrikar Yeah. Bharat. And I'll go back to the point that Sahil had mentioned in the previous Hmm. chat, that Indian team management, would they be bold enough to give Exactly. hand to debuts to two True. players and give that middle order a very very inexperienced look? They True. probably want to go ahead with the Srikar with just about with the what kind of experiences, the Hmm. minimum amount of kind of experience that he has. But it would be interesting, Dhruv Jurel versus KS Bharat. Sarfaraz and Patidar, look, I'm looking forward to how they Yeah. perform, and that too on very conducive kind of conditions for them. Yeah. Taos bhai, what do you have to say? A perfect timing for Sarfaraz Khan if he gets a debut. Kind of a flat track in comparison to others. वहाँ पे प्रेशर भी थोड़ा सा कम रहेगा क्योंकि ऑब्वियसली डेब्यू गेम है, प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है, रन बना के आ रहे हैं डोमेस्टिक क्रिकेट में, तो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी हो सकता है, एक अच्छा चांस हो सकता है सरफराज के लिए. फ्लैट ट्रैक तो आपने बता दिया ऑब्वियसली रहेगा क्योंकि फर्स्ट दे आर प्लेइंग विद Yeah. टू फास्ट bowlers. Usually you saw, I mean, what you saw in the last test match where he Hmm. played with four spinners with Shoaib Bashir being there and Hmm. only James Anderson being the fast bowler. So Hmm. you come to know exactly this is not going to be a vicious turner. Hmm. Rajkot is definitely going to be a good flat track, which I think all the batsmen should enjoy. They should not take that worry with them. But then I wouldn't say that he won't be nervous. He will be definitely nervous यार, क्योंकि Hmm. 3 साल से बंदा परफॉर्म कर रहा है. He's not being given his opportunity. Bangladesh was the best chance last year. He could have got one, and then your opportunity is coming when there is no Virat Kohli, when there are things not going in India's favor, despite winning the Hmm. last Test match. Hmm. And then there is a sword hanging on top of your head कि भाई अगर तुम ये मैच में कुछ खास इंप्रेस नहीं कर पाए, इवन इफ यू डोंट, आई मीन इफ यू स्कोर अ 50 दैट्स फाइन. आई मीन अगर आप इंप्रेस नहीं कर पाए, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द नंबर्स, आई एम टॉकिंग अबाउट द इंप्रेशन. इफ यू नॉट Hmm. एबल टू इंप्रेस, देन देयर विल बी अ लॉट ऑफ पीपल will come to conclusion that this guy is not cut out for cricket, टेस्ट क्रिकेट और टॉप लेवल क्रिकेट, मतलब जो आप जिससे आप लोग कंक्लूजन पे आ जाते हैं. They'll forget that the last 3 years that he has performed in domestic cricket, the last 3 years he's dominated the way he's dominated in Ranji Trophy cricket. Obviously, Test cricket is completely international cricket, is completely different from what domestic cricket is. But yeah, big opportunity, great chance to impress. And if he gets a good one over here, then definitely he's going to, बड़ा opportunity है उसको अपना Hmm. consistently maintain करना अपनी जगह. So that will be another challenge. But for now, there will be definitely butterflies in the stomach. He will be Yeah. nervous, excited. घर पे मुझे पता नहीं क्या बन रहा होगा उनके नौशाद. He will be Hmm. nervous. His father will be the most nervous person because the other day I spoke to him. Yeah. He was very unhappy, dejected after Team India lost the final against Australia, India under 19. Hmm. So he was very, very upset, Rashad. But yeah, he must be excited to watch his son play tomorrow. So there will be mixed emotions everywhere right now, from Sarfraz out there as well as people at home and friend circle and people in किसी Mumbai ने right now. But किसी ने yeah, दिया किसी ने दिया हो ना हो, ताउस भाई ने सरफराज को डेब्यू कैप दे दिया है ऑलरेडी. मैंने दिया नहीं है मतलब. It will be a nervous moment. A big, Yeah. big day tomorrow. I don't know. Yeah. Now it's Yeah. become very obvious. Has to play. Yeah. He has to play. Yeah. But अनिमेश, थोड़ा सा लाइनअप में पीछे जाऊंगा मैं. 3 नंबर पे जो बैट्समैन बल्लेबाजी कर रहे हैं, ठीक है, सेंचुरी आ गई है शुभमन गिल के बल्ले से, लेकिन नाउ ही हैज टू बिल्ड
build up on it, और responsibly यहाँ खेलना पड़ेगा, क्योंकि बहुत यंग, बहुत ब्रीफ करियर वाला एक लाइनअप हो गया है मिडिल ऑर्डर। तो शुभमन के लिए कुछ जो दिक्कतें थी वो विनीत ने जो मेंशन किया, राजकोट की पिच थोड़ा सा बैटर्स को हेल्प करेगी तो शुभमन के लिए भी अच्छा चांस होगा यहाँ पर स्कोर करने के लिए, और वो अपनी जो एक कहीं ना कहीं एक गैप क्रिएट हुआ था जो उनकी बैटिंग परफॉर्मेंस में, उसको फिलअप करना चाहेंगे आने वाली पारियों के साथ साथ। और जैसे जैसे देखिए इंजरी कंसर्न खत्म होंगे टीम इंडिया के लिए, कहीं ना कहीं चांसेस कम होते जाएंगे, चाहे वो रजत पाटीदार के लिए हो और या फिर सरफराज को जो कल डेब्यू का मौका मिल सकता है उनके लिए। लेकिन इसके साथ साथ ये तलवार कहीं ना कहीं शुभमन गिल के गले पर भी लटक गई थी, जिस तरह की परफॉर्मेंस उनकी आ रही थी। अगर ये सेंचुरी ना आती और ये इंजरी कंसर्न्स ना होते और आपको फुल प्लेज स्क्वाड देखने को मिलती, टीम इंडिया के बैटर्स हैं वहां पर, फिर उनके लिए जगह बनना मुश्किल हो जाती है और कहीं ना कहीं किसी भी डेब्यूटेंट के बल्ले से एक बेहतरीन पारी आपको देखने को मिल जाती है। तो ये मुश्किल उनके लिए खड़ी हो रही थी, तो उस हिसाब से कहीं ना कहीं उनके ऊपर प्रेशर अभी भी होगा। कुछ प्रेशर जरूर रिलीज हुआ है पिछली सेंचुरी से, लेकिन एक सेंचुरी काफी नहीं है मेरे हिसाब से। वो जिस तरह की कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस नहीं आ पा रही थी उनकी बल्ले, जितना अनकंसिस्टेंट वो पिछले दिनों में रहे हैं, तो प्रेशर है। और वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक मेंटल बैगेज ज्यादा दिख रहा था उनके बल्लेबाजी में, क्योंकि मुझे लगता है कि उनके पास वो आर्ट नहीं है एक बैटिंग के लिए, उनमें कोई ऐसा डिफॉल्ट है कि वो फॉल्टी है कि वहां पर उनसे कोई चीजें नहीं हो पा रही, क्लिक नहीं हो पा रही। मेंटल बैगेज ज्यादा हो गया था और वो हो जाता है। और कहीं ना कहीं मेरा ये मानना है कि जितने नए क्रिकेटर्स हैं, जिस तरह के जिन्होंने अपना पिछले 3-4 साल में करियर देखा है, तो वो जो ये सोशल मीडिया अटेंशन या जिस तरह की चीजों से ज्यादा कहीं ना कहीं जो एक स्टार वैल्यू मिल जाती है, वो एक बर्डन भी क्रिएट करती है। देखिए वो ब्लिस भी होता है, तो उसके साथ साथ कहीं ना कहीं अभिशाप के रूप में भी आपके लिए उभर जाता है। और शुभमन गिल के लिए मेरे सामने वही देखने को मिल रहा था। श्रेयस अय्यर का जो अभी आप देख रहे हैं रिसेंट उनकी जर्नी रही है, इतनी इनिंग्स के बाद भी उनको मौका क्यों मिल रहा था कि एक बड़ा नाम है, और बड़ा नाम सिर्फ अपनी बैटिंग के दम पे अभी प्लेयर्स नहीं बनते दिख रहे। तो वो बड़े नाम का जो एक हाइप क्रिएट हो जाता है तो उसका मेंटल प्रेशर भी आता है, वो मुझे शुभमन गिल के साथ दिख रहा था। और वो अब थोड़ा मुझे लगता है उससे जितना वो डील कर पाएंगे वो उनके क्रिकेट करियर के लिए, क्योंकि अभी उनकी बहुत लॉन्ग रन है उनका, वो उनके लिए बहुत अच्छा होगा। और अभी एक अच्छा मौका है, क्योंकि कहते हैं ना कि अभी दिन मतलब इंडियन क्रिकेट टीम के हिसाब से उनके लिए दिन खराब चल रहे हैं, तो उसमें वो अच्छा मौका है कि वो अपने लिए दिन अच्छे कर सकते हैं। जी, कैपिटलाइज कर सकते हैं उस मौके को। बट अगेन कमिंग डाउन टू द मिडिल ऑर्डर अगेन, श्रीनी, जो विनीत ने मेंशन किया, विल द टीम मैनेजमेंट बी दैट बोल्ड टू गिव अ डेब्यूट टू 2 प्लेयर्स एक ही गेम में, बोथ सरफराज एंड ध्रुव? ये टीम मैनेजमेंट तो कर तो कुछ भी सकती है। मैं मतलब अब वो दैट इज अ वेरी डाइसी क्वेश्चन, विल द टीम मैनेजमेंट डू। हम या तो वो बात कर ले या लॉजिक बात कर ले। इनके भरोसे आई एम नॉट गोइंग टू से दैट ये देखो, बट सी आई एम नॉट गोइंग टू बी too unhappy if they give Dhruv a chance there, because एक हंगर जो होता है ना, एक सही टाइम पे होता है। आपको ध्रुव जुरेल को देखो, अब वो बेंच पे बैठा है, वो देख रहा है कि केएस जो है वो स्ट्रगल किया है अब तक सीरीज में। एंड यहाँ पे आज का मॉडर्न डे क्रिकेट का एक डिमांड ही है कि there is so much competition, there is so influx of talent by the season, that if you don't make full use of an opportunity that you get, somebody is just waiting to pull the carpet from under your feet, right? Which is what we saw in the case of an MS Dhoni around, and a Dinesh Karthik and a Parthiv Patel, and all those wicket keeper batsmen who were there around. Why did MS as in whole early on pick them in their careers respective places? Because he made use of the opportunity better than the others could, right? So from that standpoint, if you're going to look at it, then why not? I'm not going to be too disappointed if Dravid and Rohit decide to give Dhruv a chance. वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अब आप मतलब डेब्यू पे आप कह रहे हो, अभी हर कोई रोहित को अगर आप छोड़ दो तो मोटा मोटा ये पूरी टीम ही नहीं है, तो आप एक ही साथ सारे यंगस्टर, सारे नए लड़कों को खिलाओ, पता चला दे यूनाइट एंड कम टुगेदर एंड डू समथिंग स्पेशल, you never know. So again, this is also about what exactly is the captain and the coach, what are they witnessing in the net sessions, training sessions. They're extremely important. I would like to hear this from our man Sahil Malhotra, as to what is he watching in the nets, what is he seeing there, because that's extremely important.
And today, from what I was, in fact, I was having a chat with him. I remember him telling me that Dhruv Jurel was looking like a guy who's going to be part of the action tomorrow. So let's hope. That's the thing. You know, मैं एक मेरे दिमाग में एक चीज आ रहा था आप जब बात कर Yeah. रहे थे इस चीज को। 2 से 3 चीजें हैं दैट आर गोइंग टू स्टैंड आउट, यू नो। अब ये विकेट जो है, ये कड़क हिंदी भाषा में अगर आप देख लें तो ये पाटा ट्रैक है, और राजकोट का ट्रैक रहा पाटा है। वो एक तो वो शहर से दूर, धूप पड़ती है, वो मतलब Yeah. लाइक पार्ट ऑफ, वहां से आगे जाओ वो लैंड ही बैरन पूरा ये है, Yeah. उसका नेचर ऑफ द सॉइल ही है, यू नो। It's like one of those dry flat tracks whenever you go run. आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलो, देखो जो खेला जाता है, मतलब लास्ट टाइम when India and England played a test match here, 6 सेंचुरीज बनी थी इस ग्राउंड पे। 4 इंग्लैंड की तरफ से आई थी, 2 इंडिया की तरफ से आई थी, और यू नो काफी रन पड़े थे, और उनमें से 2 जो थे सेंचुरी बनाने वाले थे, वो थे स्टोक्स और रूट। जिस बात पे आके ये कन्वर्सेशन मेरी, यू नो, appetite to be there and score runs is going to determine the outcome of this game. आप में कितनी भूख है। अब यहाँ पे अगर मैं जो रूट की बात करूं, उसने एस्टैब्लिश किया है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उनमें कितनी हंगर है रन्स की, राइट। आप बास्केटबॉल देख लें और बेन स्टोक्स की अप्रोच देख लें टुवर्ड्स बैटिंग, व्हाट ही ब्रिंग्स टू द गेम, एंड आप जिस तरीके का फ्लैट ट्रैक है उसको देखें, तो देन यू आर लुकिंग एट अ जायंट who can make better use of the opportunity here than probably any other player between the two teams, right? तो इसको हम, और तीसरा चीज है to get something special out of a dead track, which is what Jasprit Bumrah showed us in Visakhapatnam by bowling that spell to Pope and to Root and that Stokes wala. Yeah, Stokes, yeah. So मैं क्या कहना चाहता हूँ ये है कि ट्रैक फ्लैट है, रन बनने वाले हैं, और बॉलर्स के लिए ज्यादा यहाँ पे कुछ नहीं है। तो इसमें 2 चीजें ना उठ के बाहर सामने, मतलब अलग से खड़े रहेगी। नंबर 1, what is the hunger with which, what is the appetite you can whet going into a game like this, standing there and getting runs on board? That appetite will matter. It will be everything. And second, from a bowling perspective, how can you get derive something special out of a track that is not going to give you anything? ये 2 चीजें, ये 2 एलिमेंट will decide this game. That's it. Yeah. Taus bhai, what do you have to say? क्या इतना बोल्ड डिसीजन ले पाएगी टीम मैनेजमेंट? श्रीनी explained it at length, but क्या राहुल द्रविड़ उस माइंड सेटअप के साथ जाएंगे? राहुल द्रविड़, I mean, he's been very conservative यार, वो हमको पता है exactly, but then वो bold step लेना कि भाई 2 डेब्यूटेंट, I don't mind, क्योंकि आप देख रहे हैं जब आप विकेट कीपर कौन है, भूल गया मैं, श्रीकर भरत तो लास्ट 2 मैचेस में देखिए, I mean, you look at the confidence, you could look at the body language behind the wickets. He was okay, he was not as chirpy like a Riddhiman Saha, or maybe confident behind the, the collection also. Then you talk about the batting. देखिए आजकल मॉडर्न डे क्रिकेट में आपका बैटिंग बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट करता है, बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है आपका विकेट कीपर कैसा बैट कर लेता है, आपको एक साइकोलॉजिकल एज देता है आपको सामने वाली टीम से। तो अगर वो आपका वो जो डेप्थ क्रिएट करता है, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी डेप्थ नहीं है, आपका स्ट्रगल वहां तक ही खत्म हो रहा है कि भाई एक आपका डेब्यूटेंट है, फिर उसके बाद रविंद्र जडेजा, फिर आपका श्रीकर भरत गारंटी नहीं दे रहा आपको कि 30-40 के ऊपर, 30-40 भी जो आ रहे हैं वो स्ट्रगल हफ एंड पफ, हॉप स्किप एंड जंप करके आ रहे हैं, वो ऐसा स्मूथ नहीं आ रहे। अनफॉर्चुनेटली दैट इज व्हाट इट्स बीइंग प्रेजेंटेड, एंड वैसा खेल रहे हैं, एंड ही इज बीन लाइक दैट, he's not been that confident guy who's going to take on the attack, bold step out करके, या आपको रिद्धिमान साहा जैसे गट्सी क्रिकेट खेलते हुए वैसा नजर नहीं आएंगे, but that's how nature is, और उनकी स्टाइल वैसा ही है। he must be safe behind the wickets, but then अगर आप बात करेंगे ट्रांजिशन की, देखिए श्रीनी भाई ने पहले ही बोला है, not a smooth transition, but smooth transition कब होता है, जो आपके पास बैकअप आपने तैयार कर लिए होते हैं कि धीरे धीरे करके, ये सडनली आपके पास जो शॉक आया है कि भाई now we are clueless, now is the time
आपने जो गलतियां की हैं, तो अब इसको आप कैपिटलाइज कैसे करेंगे? आप धीरे धीरे आप समझ गए कि आपके एरियाज कहाँ वीक हो रहे हैं, आपको कहाँ होल्स को प्लग इन करना है। तो दिस इज द टाइम। ध्रुव जुरेल है, यंगस्टर है, मौका अच्छा है। We know exactly what kind of a player he is. He's got a double 100 under his belt. He's confident. He is a good wicket keeper. He's a wicket keeper mainly. ये नहीं कि he's a batter more than a wicket keeper like a KL Rahul. He's a wicket keeper batsman Yeah. and a batting wicket keeper. तो वो एक एडवांटेज है। तो अगर आप वो और खास करके ये पाटा ट्रैक है, आई एम स्ट्रेसिंग ऑन पाटा ट्रैक। तो यहाँ पर मौका अच्छा है ध्रुव जुरेल का। देखिए शिखर भरत के लिए भी मौका अच्छा है। He can, I mean, if he gets an opportunity, he can go and score runs on this wicket. But then अगर यहाँ पर वो थोड़ा expose, थोड़ा body language, I'm worried about his style of play. That is the only thing is a major cause of concern. Otherwise, I don't mind going with two debutants. और आपको देखिए दिखाना है, इंग्लैंड सामने है यार। इंग्लैंड is must be in control despite being one all. पिछले मैच हार गए हैं, मगर वो अभी भी वो कॉन्फिडेंस बरकरार है, क्योंकि आपके पास विराट कोहली नहीं, क्योंकि आपके पास केएल राहुल नहीं है, रविंद्र जडेजा अभी वापस आए, एक टेस्ट मैच वो करें। तो अभी आप सोच रहे हैं कि भाई सवाल हजार है, मगर बोल्ड स्टेप लेना है तो अभी लेना है। इसके बाद मुझे लगता नहीं मौका आपको कब मिलेगा। लास्ट सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, फोर्थ एंड फिफ्थ, इसके बाद Vineet, before you add, I also have a question for you. जो इंग्लैंड ने प्लेइंग 11 निकाला है, क्या हमारा 11 उसके ऊपर डिपेंड करेगा अब? I don't think so. I really don't think so. उसके ऊपर डिपेंड करेगा. But before I elaborate on that, just to go back on that KS Bharat point what Srini had mentioned and Tauzat mentioned. Look, my issue, my point here is, what are we assessing Shrikar Bharat on? Let's try and assess him on his primary skill set as a keeper first. Has he done anything wrong? Has he done any blunder there? No, that's pass, right? Now, Tauz mentioned the attitude of it. Doesn't really is not the chirpiest behind the wickets like a Rishabh Pant would be, or a Saha when it comes to his batting approach and everything. I have nothing against Dhruv Jurel. If he gets a debut, fantastic. The reason why I stick to Shrikar Bharat is that you look back at the numbers. Okay, batting ab baat kar rahe hain. Batting की आप बात कर ले, श्रीकार भरत in his last 10, 15, whatever innings, including first class, including India A, this guy has 200s to his name and 3 odd 50s. Dhruv Jurel on the other hand, ऐसा कुछ ताबड़तोड़ काम नहीं किया है कि वो बैटिंग इतना ही कर दिया. He has 450 plus scores in the last 10 FC games that he has played. 69 against India Lion और 2 रणजी में भी 150-53 मारे हैं. So my point here is, यार बैटिंग आप कंपेयर कर रहे हो ना, इक्वली है. ऐसा नहीं है कि ध्रुव जुरेल बिल्कुल पंत की तरह बिल्कुल धुआंधार ऐसी बैटिंग कर लेंगे. लेट्स ट्राई एंड असेस श्रीकार भरत और गिव हिम द बेनिफिट ऑफ द डाउट बिकॉज ऑफ हिज प्राइमरी स्किल सेट. एक गेम और देखे देखो. आई एम कंप्लीटली इन कंकर विद व्हाट तौज हैज मेंशन कि वो उनका अप्रोच दिख नहीं रहा है. इट्स ऑल अबाउट ऑप्टिक्स समटाइम्स कि यार दिखने में थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, दिखने में थोड़ा लेस इन कॉन्फिडेंस लग रहा है. Srini mentioned about watching these guys in the nets. I covered the first 2 games. I did watch both Shrikar Bharat and Dhruv Jurel batting, and both of them batted at the edges and nets. ज्यादा कुछ फर्क उसमें नहीं था. Yes, Dhruv Jurel was looking to be a bit more aggressive. That could have been the brief in the nets कि आपको उस तरीके से खेल के आप देखो. श्रीकार भरत को बोला गया होगा कि यार थोड़ा रुक के खेल के देखो. The only point of contention or the only thing that probably backfires for Bharat is the way that he got out. वो जो छोटी डिलीवरीज पे रिहान अहमद पे वो जैब मारने की कोशिश कर रहे थे, could not connect. That you can put it down to that momentary lapse in concentration or that lapse in judgment or lack of execution. इंटेंट में मेरे को लग नहीं रहा कि कोई कमी थी, बिकॉज दैट 41 दैट ही स्कोर्ड इन द फर्स्ट टेस्ट, आई मीन इंटेंट था यार, अच्छी तरीके से खेल रहे थे. सो आई एम नॉट सेइंग कि यार ध्रुव जुरेल को खिलाना ही नहीं है. एज श्रीनी मेंशन, जुरेल को मिलता है मौका तो वेल एंड गुड, बट ट्राई to take a step back and assess what are we trying to assess Shrikar Bharat on his batting or his keeping. That is the issue. बट अनिमेश, यहाँ पे अगर मैं इंटेंट की बात करूँ, ठीक है, आई अंडरस्टैंड व्हाट विनीत इज सेइंग कि कहीं ना कहीं वो एग्जीक्यूशन, वो लैप्स ऑफ कंसंट्रेशन हो गया, ठीक है, लेकिन अगर वो लैप्स ऑफ कंसंट्रेशन 100 250 के बाद होता तो समझ आता. इट हैज बीन अ स्ट्रिंग ऑफ लो स्कोर्स, इसलिए कहीं ना कहीं वो क्रिटिसिज्म हो रहा है. व्हाट आर योर थॉट्स? मैं सभी के जो कमेंट्स है उससे निकालना चाहूंगा. सबसे पहले ताउस के कमेंट से आऊंगा, वो जो नाम भूल गए थे. तो केएस भरत ने ऐसा किया नहीं है कि कोई भी उनका नाम भूल सकता है. मेरा जो असेसमेंट है उनको लेके, और उन्होंने ऐसा कुछ अचीव नहीं किया कि उनका नाम भुलाया जा सकता है. और वो जिस तरह से परफॉर्म करते हैं, जो विनीत ने स्टैट्स की बात की,
ठीक है, इंग्लैंड लायंस के खिलाफ उनकी सेंचुरी आई थी, लेकिन एग्जीक्यूशन की ही बात है ना, और जो प्राइमरी स्किल सेट की बात हुई कि उनकी विकेट कीपिंग के बिहाफ पे उनको कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक एज मिलना चाहिए। दूसरी बात, और जो अभी देखिए 7 मैचों में 231 रन है उनके, टेस्ट मैच में 12 इनिंग खेलते हो, 20 का एवरेज, वो उनको मेरे हिसाब से वो क्वालिफाई मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए उनको इस इंडियन टीम के स्क्वाड में। प्राइमरी स्किल सेट के हिसाब से सिर्फ एज एन विकेट कीपर, रैंक टर्नर्स पिचेस थी वहां पर, ठीक है वो थोड़ा बहुत एज मिल रहा था, लेकिन मैं उसको मतलब मैं नहीं पचा पाता हूँ, क्योंकि हम 83 के इरा में नहीं खेल रहे हैं कि सैयद किरमानी एज एन विकेट कीपर ही आपकी टीम में सिर्फ आपके एक स्पॉट लेकर बैठे हुए हैं कि वो एक अच्छे विकेट कीपर हैं। हम एक अलग इरा में खेल रहे हैं जहां पर एज एन विकेट कीपर बैटर की तलाश होती है, और वो कहीं ना कहीं टिक बॉक्स मेरे हिसाब से केएस भरत वो टिक नहीं करते, और हर बार फेल हो जाना, कहीं ना कहीं छोटे रन छोटी पारियां खेल कर आउट हो जाते। तो मैं आपको पॉइंट उठाना चाहता था कि आप छोटी पारी को ही बड़ा करके कहीं ना कहीं गलत सवाल क्रिएट करोगे तो आप पे सवाल कम उठेंगे, लेकिन 7 में 20 का एवरेज, जहां पर आपको 12 इनिंग में मौका मिला बैटिंग करने का, उसके बाद भी आपका 20 का एवरेज बन रहा है, और ये नहीं हो रहा है कि आपको बैटिंग का मौका नहीं मिला, अच्छा खासा बैटिंग का मौका मिला है, बहुत सारे टाइम पे टीम स्ट्रगल कर रही होती थी, वहां पर केएस भरत डिलीवर करने में नाकाम रहे। और डोमेस्टिक सर्किट में चीजें एग्जीक्यूट कर लेना वो बहुत सारे प्लेयर्स के साथ हुआ है, संजू सैमसन उसका बड़ा उदाहरण है, कई सारी सेंचुरीज करने के बाद जैसे इंटरनेशनल क्रिकेट में वो आते हैं वो फेल हो जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं वो वही प्लेयर में उसी कैटेगरी में आप कहीं ना कहीं चले जाते हो कि आप डोमेस्टिक में क्या कर रहे हो, उसके बाद आपको जैसे इंटरनेशनल में मौका मिलता है वो आप टिक नहीं कर पाते। तो मेरे हिसाब से, और जितने भी अभी तक कमेंट्स हैं तो उसमें जो एक हिचक दिखती है ना कि टीम मैनेजमेंट क्या सोचेगा, तो मेरे हिसाब से हर चीज को लेके मैं हमेशा जो सोचता हूँ कि 2 आंसर होना चाहिए, व्हाट विल बी द टीम मैनेजमेंट में, व्हाट वी थिंक अबाउट इट। व्हाट इज लॉजिकल? वही कन्वेंशनल रहेगा कि आप सारी छींटे अपने ऊपर नहीं आने दोगे, आप रखोगे केएस भरत को कि कहीं ना कहीं अगर फेल हो गए सारे के सारे एकदम से डेब्यूटेंट, तो आप पे सारे सवाल खड़े हो जाएंगे कि भाई इतना सारा एकदम से अनएक्सपीरियंस स्क्वाड आपने क्यों उतार दिया आपके पास केएस भरत होते हुए भी। तो वो कहीं ना कहीं वो केएस भरत के साथ ही जाना चाहेंगे, एकदम से इतना ट्रायल मोड में नहीं जाएंगे, इतना ट्रांजिशन मोड में एकदम से नहीं जाना चाहेंगे। तो आपको 2 ही डेब्यूटेंट्स एक तरीके से, क्योंकि रजत पाटीदार का ये दूसरा मैच होगा और सरफराज को डेब्यू कैप मिल सकता है, उसके अलावा आपको ध्रुव जुरैल नहीं देखने को मिलेंगे मेरे हिसाब से। तो ये मेरा मानना है, हालांकि मैं नहीं चाहता हूँ, जो मेरा मानना है टीम मैनेजमेंट ऐसे ही तरीके से सोचेगा, और जो मेरा मानना है कि ध्रुव जुरैल को वो मौका मिलना चाहिए, इसमें थोड़ा सा वो बेटर प्लेयर है, जिस तरह से उनका भी डोमेस्टिक गया रहा है पिछले कई सालों में, उनको देखते आ रहा हूँ जिस तरह से वो उनका अप्रोच है वो इंडियन साइड को कहीं ना कहीं ज्यादा सूट करेगा, जिस सिचुएशन में भी इंडियन साइड है अपनी बैटिंग में कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे हैं। और दूसरी बात जो ताउस भाई ने कही थी, एक लास्ट उनका जो कमेंट था कि इंडियन टीम ने अभी समझ लिया है कि उनके वीक लिंक्स कहाँ पे हैं, तो वो मेरा कहना है वो कभी नहीं समझ पाते, इसीलिए ऐसी सिचुएशन में तो समझ गए होते तो आज ऐसी सिचुएशन ही क्रिएट नहीं होती, और अभी यहाँ से समझ लेंगे ये कहना मुश्किल होगा। True. Shrini, Animesh rightly mentioned, you could have, KS Bharat could have made those small starts, into big ones. यही ऋषभ पंत ने करा, इंग्लैंड जाके, ऑस्ट्रेलिया जाके, he held on to his nerves और वो बड़े स्कोर लगाए, बड़े हंड्रेड्स लगाए। वो कहीं ना कहीं KS भरत की साइड से लैप्स है, ठीक है, आई अंडरस्टैंड द इंटेंट थिंग, बट एग्जीक्यूशन और उसको कैपिटलाइज करना, इसलिए कहीं ना कहीं उनके बारे में बात कर रहे हैं, उनके और ध्रुव के बारे में एक डिबेट कर रहे हैं। You're on mute, Shrini, you're on mute. वो ध्रुव का और उसका जो डिबेट है शिखर भरत का, ये अभी कहाँ, ये तो फर्स्ट टेस्ट से चला आ रहा है ना कि ध्रुव को चांस दो, ध्रुव को चांस दो। Why? मतलब मैं आई डू अंडरस्टैंड कि ध्रुव को ठीक है चांस अगर मिलनी चाहिए, चांस हर किसी को मिलनी चाहिए, बट ये डिबेट अभी का नहीं है, ये डिबेट फर्स्ट टेस्ट से है। वो लॉजिक तो मेरे जहन में बैठा ही नहीं कि क्या मतलब ऐसी खाई है। सेकंड, एक बेसिक, एवरीबडी हैड अ वेरी वैलिड पॉइंट टू मेंशन। अभी जैसे अनिमेश ने कहा कि भाई हर कोई, अगर आप अभी आप यंग डेब्यू करवा दोगे, नया ये करवा दोगे, तो फिर आपकी आंसरेबिलिटी goes for a toss. That's something. Second is a bit of what this guy mentioned, Vinit mentioned, very important. Your primary skill set is wicket keeping, your secondary skill set is batting, right? I do understand that that line has blurred in today's modern day game. Still, at the end of the day, your primary skill set is wicket keeping. And barring that one missed opportunity that I think what was in Vizag. Stumping in Vizag. Yeah. Barring that one chance, he's been pretty decent behind the stump. So what are you going to penalize him for? For not getting the runs that are required?
वो तो आपको शुभमन गिल भी नहीं दे रहे थे पिछले 100 तक, वो तो हम्म आपको श्रेयस अय्यर भी नहीं दे रहे थे। अब वो बात अलग है, पता नहीं बैक स्पैज़म है या क्या है, बट बात मैं कह रहा हूँ कि वो तो अक्रॉस द टीम स्ट्रगल हो ही रहा था रन्स का। That's where I said, if that excitement, over excitement leads to a Rahul Dravid or a Rohit taking that last minute call, नहीं बॉस मेरे को टेंशन नहीं, मेरे को रिस्क नहीं लेना यार, मेरे को हर समय प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाके बैठना होता है, मेरे को कुछ तो नया करना है ताकि मैं कुछ नया बताऊं वहां जाके, तो फिर वो अलग है, वो तुम ध्रुव को खिला देते हो, या फिर तुमको सही में लगता है कि भाई एक एग्रेशन दिखा रहा है नेट्स में, बैट के बीच में लग रही है बॉल, एक एक मेरे को एक अच्छा रिदम दिख रहा है इसकी बैटिंग में, और मुझे इस एग्रेशन की जरूरत है। वीज़ोवी आप भरत को देख रहे हो नेट्स में, आपको अगर वो कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा है, बेस्ड ऑन ऑल दैट यू वांट टू टेक अ कॉल, एज आई सेड इट्स अ वेरी प्रैक्टिकल वन, एंड परफॉर्मेंसेस एट द एंड ऑफ द डे Okay. जस्टिफाई Okay, just for your opinion, I just want to have okay, go I just complete your complete point. this one line. Yeah. You pick a Dhruv Jurel at the cost of Bharat. You may come out looking a hero, you may come out looking a zero. At the end of the day, it is still got to be like, kind of tried and tested there out on the field. The boy has to walk out there, click. Like you picked Patidar over Sarfaraz. Nobody is complaining the fact that you shouldn't have done that. Why? Because at the end of the day, Patidar went out there and in his brief say, like, he came out looking good. Now, Good, had yeah. he played some stupid shot and gotten out to, kind of a rash stroke, and probably your lower middle order would have struggled, you would have immediately said, boss, I would have rather bolstered my batting at number 5 and had a Sarfaraz in, right? He's been, so I'm saying that there are too many ways to conclude this. So Okay. performances eventually Okay, balance out. I just want to have your opinion and Taus bhai's opinion on this. Okay, let's give Dhruv a couple of games for now in this series, right? 2 गेम केएस भारत के पास हो गए, 2 गेम ध्रुव के पास हो गए. अगर बहुत डिसअपॉइंटिंग बैटिंग होता है तो यू कैन मूव बैक टू केएस. नो, व्हाट इज योर ओपिनियन? No. I definitely I don't belong to that school of thought at all. Okay. 2 गेम इसको दे दो, 2 गेम इसको दे दो, नहीं, बिल्कुल नहीं. मुझे नहीं, हाँ, अगर आप कन्विंस्ड हो, एज आई सेड, मैंने वही एक्सप्लेन किया अभी, एज आई सेड, इफ यू आर फाइंडिंग, यू आर टॉकिंग अबाउट राहुल द्रविड़, यू टॉकिंग अबाउट सम रियली अकम्प्लिश्ड नेम्स हु आर स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम इन आउट देयर. If you're really disappointed and disheartened by Bharat's presence and saying that, no, boss, I have taken a bloody wrong call. Remember, if there was a Rishabh Pant around, you wouldn't be having this debate, right? So, again, I don't want to, kind of veer away from the subject that we are. Point is, you've given a guy an opportunity. Now, stick to it and try and understand, what exactly are you seeing? Everything is not black and white. Everything is not, find out if the primary job for which you have picked him, is it happening? And if it's happening, like, how do you rate it? Basis that, then you take a call on whether the secondary job, which is his job to score runs, why is it not happening? Basis which you take a call, a very practical call based on what you're watching in the nets, what are the training sessions been like. And if you see that, this guy is technically struggling on tracks like these, I would like to believe that someone like Bharat has the ability to bat on these tracks. That's what I have. Dhruv Jurel तो भाई, with all due respect, राजस्थान रॉयल्स के बाद से ही देखना शुरू किया हूं मैं ना. रणजी ट्रॉफी, ये लड़का दिल्ली पे अच्छा खासा फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेला है. हम क्यों इस चीज को इतना इग्नोर करने पे तुले होते हैं, मेरे समझ में नहीं आता है. So I am definitely not of that school of thought कि 2 मैच इसको दे दो, 2 मैच उसको दे दो. नहीं, आप practical call लो. People like Rahul Dravid have something really kind of, they obviously Rahul Dravid will see things that people like you and me can't see. So basis that, if you want to take a call, fine. True. I'll quickly take a comment from Taus. I'll conclude this with one last line. If you were to tell me that, both are batting well, both are looking equally good in the nets, everything is fine, I will continue with KS Bharat. Why will I not continue? Because he gives me the primary role of behind the wickets. He does a good job. Sorry. Okay. I'll quickly take a comment from Taus bhai and then I'll come to you. Yeah, Taus bhai. I'm only worried. See, I was just looking at the YouTube videos of Dhruv Jurel, wicket keeping as well as batting. I mean, the flow that he has when it comes to batting. See, यहाँ पर I agree with Srini bhai कि nobody is convincing comfortable against these kind of wickets.
यू नेवर नो, ध्रुव जुरेल आके वो एक 100 मार दिया कल का पाटा ट्रैक में तो अपनी जगह फिक्स कर देगा. That's The a comment other we thing is have. that वही तो, that is what, like फ्लैट ट्रैक है, मिल जाएगा ऑपोजिट, बट आई एम ओनली कंसर्न अबाउट, देखिए हमारा बैटिंग ट्रैक, बैटिंग ऑलरेडी डेप्थ में लैग कर रहा है. एंड ध्रुव जुरेल इज अगेन, आई वुड से कि ही इज नॉट टिपिकल, लाइक नॉट अ केएल राहुल, जहां पर सिर्फ उसको बैटिंग आती है और सडनली उसको बोल दिया ग्लव्स पहन ले. क्या यूपी से करके आ रहा है, जूनियर क्रिकेट से कीपिंग करता हुआ आ रहा है, तो बंदा हैज अ लॉट ऑफ आइडिया कि विकेट पीछे क्या करना है, व्हाट इज हिज रोल, व्हाट ही इज गॉट क्लैरिटी. जस्ट दैट ही इज गोइंग टू गिव दैट एक्स्ट्रा रन्स, एक्स्ट्रा अग्रेशन देगा, बैट के साथ एक्स्ट्रा रन्स देगा. जो भरत, आई वुड से केएस भरत 30-40 कर रहा है, तो शायद वो 60 करेगा, तो वो 20 का भी एडवांटेज हो जाता है. तो वो 40 जो मिल रहा है हमको भरत से, इट्स नॉट लुकिंग दैट 40, यू नो, कन्विंसिंग 40. या स्ट्रगल करके आज ये विकेट पे 40 फाइटिंग स्कोर है. व्हेन कांगा लीग में भी 30-40 रन करना भी बड़े बात होता है. इट्स लाइक अ हाफ सेंचुरी इफ यू प्ले ऑन दोस काइंड ऑफ विकेट. एंड आई डोंट रूल आउट दिस कि जो 40s है वो इंपॉर्टेंट है, बट देन जब आपको सामने वाले को भी एक इंप्रेशन देना है कि भाई हमारा टीम स्ट्रांग है उतना, यू हैव टू गो आउट देयर, शो एटलीस्ट कि भाई वी हैव इनफ ऑफ डेप्थ इन बैटिंग. एंड इफ यू कम विद यू नो लूज डिलीवरीज, और जहां पर भी आप लेट बैक हो गए, तो हमारे पास बैट्समैन है जो अटैक करेंगे, आपको चढ़ के खेलेंगे. एंड दैट इज वेयर यू नो जुरेल इज नीडेड. यहाँ पर आप शेल में खेलोगे तो बोलर्स, चांसेस आर हाई कि बोलर्स आपके ऊपर चढ़ जाएंगे. तो आपका जितना बैटिंग होता जाएगा, डेप्थ तो है ही नहीं आपके पास, तो आपको डेप्थ कैसे आपको वो करना, आपको एक अच्छा स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइन. ध्रुव जुरेल अगेन आई वुड से ही इज अ विकेट कीपर एंड अ बैट्समैन. ही इजंट जस्ट अ विकेट कीपर. तो वो एक एडवांटेज जरूरत हो जाता है. बट विनीत वाज डूइंग समथिंग. Yeah, Vineet, you had something to say. No, just to add, क्योंकि हमने एक बहुत ज्यादा लंबा कॉन्वर्सेशन ले लिया. अगेन टेकिंग ऑन टू द श्रीनीस पॉइंट, इट्स अबाउट कंसिस्टेंसी. अगर आप सीरीज की बात करें, इफ यू रिमेंबर, द क्वेश्चन वाज आस्क्ड टू राहुल द्रविड कि विल केएल राहुल कीप. He said no, we are not even thinking about it for the series. He didn't say कि एक टेस्ट मैच के लिए, दो टेस्ट मैच के लिए, तीन टेस्ट मैच के लिए. So if you are announcing a squad, आप किसी स्क्वाड में इतने लंबे सीरीज में कर रहे हैं, आप एज अ टीम मैनेजर उस बंदे को कॉन्फिडेंस देगा ना, भाई तेरे पास 5 मैच है, इसमें तो दिखा सकता है, तो वेल एंड गुड. नेक्स्ट में तुम्हारा नहीं कटेगा, तुम्हारी बारी नहीं आएगी. सो दैट इज द काइंड ऑफ कंसिस्टेंसी यू प्रॉब्ली नीड, यू नो, एंड दैट इज द प्रॉब्ली काइंड ऑफ थिंग दैट प्रॉब्ली श्रीकार भरत को भी थोड़ा एक कॉन्फिडेंस देगा कि हाँ मेरे पास इतने मैचेस हैं. हर इनिंग्स में वो जाएगा तो मतलब वो तलवार जो लटकी रहती है वो नहीं रहेगा. This is exactly what happened. If you go back to the GABA test and everything, the famed series, हनुमा विहारी था. Yep. आपने उसे ओपनिंग कराया, आपने उसे नंबर 3 खिलाया, नंबर नंबर 3 7 खिलाया. खिलाया, हैमस्ट्रिंग इंजरी हुई, ये हुआ वो हुआ, फाइटिंग कंडीशंस में भाई ने सब कुछ आपको करके दे दिया. इंजरी हुई, अगला इंडिया टूर अनाउंस हुआ, होम भाई का नाम ही नहीं है. एंड ही वुड बी थिंकिंग कि भाई मैंने तो ऐसा क्या ही किया. सेम थिंग श्रीकार भरत के साथ भी हो सकता है कि आपने चैलेंजिंग, जो थोड़े बहुत चैलेंजिंग विकेट्स में आपको उनको खिला दिया, पाटा विकेट आया, उनको बिठा दिया. अब ठीक है, ध्रुव जुरेल किसी ने कमेंट मारा 100 मार दिया, चलो अच्छी बात है यार, श्रीकार भरत तो 100 मार सकते हैं ना पाटा विकेट में. नौबत ही नहीं आएगी. हम कह रहे कि पाटा विकेट है, 600 रन मारे, पहले 400 मार देंगे ना. भरत की बैटिंग आनी है ना जुरेल की बैटिंग आनी है, 604 पे डिक्लेयर. Okay, so Vineet, I just want to know your opinion on this. Would you like to see a KS Bharat for whole of the series, even if he fails on this kind of a track, or you will ask him If to he sit fails. if he fails? Yeah, if he fails. So benefit of the This doubt, kind if of it's a yeah. 5 match series, you're starting with Yeah. 5 match series, Yeah. give him 3 matches. Okay. If he fails in all 3, then you probably go ahead with Dhruv Jurel Fair. and say Bharat bhai ho gaya. So that is what I'm saying, कि give him at least one more game. The third test, irrespective of what the condition is. अगर उसमें भी फेल होते हैं, then ध्रुव जुरेल का बनता है, पक्का बनता है. अगर श्रीकार भरत यहाँ पे रन मार पाते हैं या यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं करते हैं, there is no reason to drop him. Just continue with him. ध्रुव जुरेल की बारी आएगी. ऐसा नहीं है कि इस बार बारी नहीं आई तो कभी आएगी नहीं. He will be there. He'll be part of the squad. You look back at रहाने, मैं 2-3 बार ये चीजों में कह चुका हूँ. रहाने जब आए थे, अपने पूरे फ्लेयर से आए थे, 3 टोर वो बैठे थे बेंच में, तब जाके उनको मौका मिला था. तो this is an Indian team. मौका इतना आसानी से भी नहीं मिलना चाहिए. That is what I'm saying. True.
Okay. Let's quickly move on to the Just one comments point. after Taus's comment. Yeah. Just one point. Striker is not a bad batsman, by the way. He plays with that freedom in domestic cricket. But then वो international cricket में shell में क्यों चले जाते हैं मुझे समझ में नहीं आता. ताउस भाई नहीं, वो टेक्निकल इशू है डोमेस्टिक क्रिकेट में भी, बिकॉज़ I've seen him. Yeah. माइंड से वो रिफ्लेक्ट So, होता है. no, understand this. No, I'll make you understand this. जब आप डोमेस्टिक क्रिकेट में जो एक थोड़ा सा इंटरनेशनल से थोड़ा नीचे है, जब आपका टेक्निकल फॉल्ट वहां पे है तो वो बहुत ज्यादा एक्सपोज हो जाता है इंटरनेशनल क्रिकेट में. दैट इज व्हाट हैपनिंग. एडेड ऑन टू दैट, जिस तरीके का जैसा शॉट मार के वो आउट हुए, वी वर लाइक क्यों खेला भाई ये शॉट, जिस तरीके से वो कैच जैब मार के आउट हुए, कैच हुए, तो वो टेम्परामेंट भी आ जाता है, प्लस वो टेक्निकल इशू और ज्यादा एक्सपोज होने लगता है इंटरनेशनल लेवल पे, कंसीडरिंग द काइंड ऑफ बॉलिंग यूनिट इंग्लैंड पोजेस. तो कहीं ना कहीं ये एक्सपोज ज्यादा होता है. डोमेस्टिक में आपको उतना नहीं पता लगता शायद. ओके, लेट्स मूव ऑन टू द कमेंट्स प्लीज. फर्स्ट कमेंट प्लीज. Yeah, Vyan is saying, Animesh, what's the point of playing an extra pacer who is only going to contribute 10-12 overs in the entire test and zero contribution with the bat? Aksar is the better choice. Your views? लेकिन जैसे पिच है उस हिसाब से पेसर की नीड होगी, और चाहे कुछ भी इसमें डिबेट आप just one thing I just got to know कि बेन स्टोक्स भी थोड़ा अपना आर्म रोल कर रहे थे, तो इंग्लैंड भी सोच रहा है कि शायद उनसे भी 10-12 ओवर निकलवाएंगे वो मैच में. नहीं. Yeah, Animesh, you will continue. मेरे हिसाब से देखिए, अक्षर जिस तरह से ठीक है बैटिंग से परफॉर्मेंस आ रहा था, लेकिन आपके पास अगर आपके पास सरफराज आते हैं, यहाँ पर बैटिंग डेप्थ होगी और पार्टर विकेट है, तो कहीं ना कहीं बॉलर की नीड ज्यादा पड़ेगी, और स्पिनर्स को वो खास मदद जो कहीं ना कहीं पिछले 2 मैचों में मिलने वाली थी, उस तरह की हेल्प यहाँ पे नहीं मिलने वाली. तो यहाँ पर अक्षर आपके लिए उतने फ्रूटफुल नहीं रहेंगे अगर आप मैच के पॉइंट ऑफ व्यू से जाएं. तो वहाँ पे अगर जो वो कहीं ना कहीं जो डिलीवर कर सकते हैं, उस चीज की नीड आपको रहेगी भी नहीं, और वो डिलीवर कर भी नहीं पाएंगे, क्योंकि इससे वो कहीं ना कहीं मदद नहीं मिलने वाली उनको. तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं सिराज बेस्ट ऑप्शन रहेंगे, जो कम से कम शुरुआती गेम में जो मैच की स्टार्टिंग में होंगी नए बॉल से कहीं ना कहीं डिलीवर कर सकते हैं, और वही पॉइंट ऑफ व्यू से टीम इंडिया जानना चाहेगी. अब इसको चाहे आप कन्वेंशनल वे कह लीजिए, चाहे फिर किसी भी तरीके की डिबेट में लेकर जा सकते हैं, लेकिन चीजें ऐसे ही पिक होंगी और होनी भी चाहिए. इंग्लैंड ने भी तो यही करा है ना, मार्कवुड को लेकर आ गए हैं एंडरसन के साथ, और 3 स्पिनर्स के साथ वो खेल रहे हैं. तो आई एग्री टू व्हाट यू आर सेइंग. ओके, नेक्स्ट वन प्लीज. Vyan again, India debuted Saurav and Dravid in the same match, Yuvraj and Zaire in the same match, Hardik, Bumrah, etc. So what's the first in debuting 2 players who are performers at the domestic level? Yes, we have been talking about Vyan, about the 2 debutants, but it is also about Dhruv किसकी जगह पे आ सकते हैं, and उनके लिए एक टॉस अप एक डिफरेंट हो चुका है. तो we have talked about it at length. Next one please. Kuldeep, how much chances of Sarfaraz getting back spasm after seeing Mark Wood name in the 11? Taus bhai, would you like to take this? Too harsh, I would say. See, he plays fast bowlers well, by the way. और flat track होगा, यहाँ पर आपको वैसा नहीं मिलेगा. T20 cricket, if you're thinking about that T20 cricket version, say कि भाई this guy will play similar kind of cricket in longer format. Yeah, he's going to be scared. He's going to play those aada pattas and all. No, this guy is a serious player. He's a serious longer version player. This guy, abhi maine, if you saw his videos or reels on on Instagram or whatever, और मैंने भी अभी कुछ उनको follow किया एक particular story के लिए. So I saw the videos. This guy was playing punches, straight drives, cover drive, back foot punches, pulls convincingly against fast bowlers. और यहाँ पर आपने स्पेशली सरफराज के लिए ये इन्होंने नेट सेशन जो रखे थे 3-4 दिन डिफरेंट विकेट्स में रखे थे. टर्निंग ट्रैक पे एक फास्ट बॉलिंग ट्रैक पे एक अलग था, और राइट हैंड एक भी लेफ्ट आर्म बॉलर नहीं रखा था, क्योंकि सारे के सारे इंग्लैंड में राइट आर्म पीसेस है. तो उन्होंने शॉर्ट बॉल भी डाले जिसमें उन्होंने पुल किया, फुल लेंथ डाले तो उन्होंने स्ट्रेट ड्राइव किया, बैक फुट गुड लेंथ डाले तो उन्होंने फ्रंट फुट पे भी खेला, बैक फुट पे भी खेला, स्पिनर्स डाले तो उन्होंने स्पिनर्स को स्टेप आउट किया. आई सॉ द वीडियोस, ये मैं अपने से नहीं बोल रहा हूँ, तो वीडियोस और साथ में बात भी किया पीपल हु वर क्लोज टू हिम, स्टेप आउट किया. उसके बाद जब बात ऑफ स्टंप के बाहर आई तो उन्होंने कट भी किया और रिवर्स स्वीप भी खेला बाय द वे. एंड स्वीप तो ही नोज हाउ टू प्ले स्वीप, एंड स्पेशली व्हेन यू प्ले ऑन द मैदान, आई मीन बिकॉज़ विकेट्स आर नॉट प्रिपेयर्ड देयर. वहां पर आपको टॉप क्लास रणजी ट्रॉफी जैसे लेवल की विकेट नहीं मिलती है मैदान में, या लोकल कोई भी कहीं पर भी. आपको वो अनप्रिपेयर्ड सब स्टैंडर्ड विकेट मिलती है, जहां पर आपको यू आर फोर्स्ड टू प्ले, यू आर फोर्स्ड टू परफॉर्म. तो आपने अगर वहां पर नहीं किया तो आपको परफॉर्म नहीं किया तो आपको ग्रोथ है ही नहीं, आपको कोई देखेगा ही नहीं. वैसे ही यशस्वी जायसवाल
he's played on these kind of wickets, unprepared wickets. नेट सेशन विकेट मैचेस में होती है, बेटर विकेट होती है, मगर जब नेट सेशन की बारी होती है तो खड्डे होते हैं, पत्थर होते हैं, बिखरे पड़े लाल मिट्टी होती है जहां पर बॉल कहीं से भी उठ के आता है। तो वो उसके लिए आपको मेंटली भी प्रिपेयर्ड रहता है, टेक्निकली भी आप फ्रंट फुट पे कब जाना है, बैक फुट पे कब जाना है। तो जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट पे पहुंचते हो और राजकोट जैसी विकेट मिलती है तो ये बच्चों का खेल हो जाता है। एंड आई होप ये बच्चों का खेल कल देखे और माँ को वो बच्चों की तरह ट्रीट करे उसको, सरफराज, मजा आएगा देखने को। Okay, next one please. Atharv, is Rajkot soil red or black? Pitch should consist bounce. Srini, your thoughts? बाउंस Bounce. वो वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता वहां पे। वो मुझे याद है, वो एक ट्रेनिंग सेशन चल रही थी वहां पे, तो वो एक पुराना जोक है इंडियन क्रिकेट में। वो नेट सेशन चल रहा था तो प्लेयर जो है विकेट कीपर ये ऐसे बॉल कलेक्ट कर रहा था, तो उसको बताया जाता था पीछे से चल रहा, वो भाई ऐसे नहीं, Yes. घुटने पे। तो बॉल see, there is you're looking at a track that is going to more or less stay intact for 5 days. That's the kind of track that you're looking at. It's not going to give you excess of anything. There is the only excess that you have here is runs. And isko abhi I don't know, I read reports of they were spraying some liquid वगैरह beneath, I don't know. Yeah. What was that? Yeah. Anything come out of it? It seemed read like anything. it seemed like drying. For drying, it was basically dry Or- करने के लिए था. No, because they are known to spray liquid to hold the soil together. Hold also. it. See, Yeah. Hold the soil together. because, So it dryness और heat इतना ज्यादा है वहां पे ना, you're talking about a region, वहां से आप 100 किलोमीटर आगे जाएंगे तो भाई रन ऑफ कच्छ के रास्ते पे निकल जाओगे आप, वो उतनी गर्मी होती है वहां पे। तो उस very गर्मी में similar वो to Hyderabad. Series similar to Hyderabad, just to hold that pitch. So दोनों exactly, जो so good to length hold area that था, soil together. hold it to good length area में, that is where that liquid और जो भी spray हो रहा था, it was just to hold it, because again this pitch इतनी गर्मी में by third day, by fourth day, fifth day, it is going to be difficult यार। तो hold और करने के लिए क्रैक ही ना आ है, जाए ट्रैक क्रैक पे। ना आ जाए और कुछ ना हो जाए, बिल्कुल wear and tear होगा ही होगा। So just to minimize that wear and tear, they are putting that liquid, बिल्कुल। spraying that liquid just to hold it together. And just to answer Atharva's question, the soil is red soil there, so no bounce. थोड़ा सा slow Black turn soil होगा, तो but you'll it'll get be very only in easy. south. यहाँ पे जाओगे तो it's right. only red. Right, That's the point. Point is don't expect excess of Bounce. anything on this track. Yeah. Okay, next one please. Priyanshu, who will be dropped, Aksar or Kuldeep? Animesh. Aksar. Okay, I'll quickly take this. Srini saying Aksar. Aksar will be dropped. You saying? Yeah, Srini. Aksar will be dropped. Okay. Taus bhai. Aksar or Kuldeep? Aksar should Sorry. be dropped. Change. Can I have the Should be. previous comment, please? Will be नहीं, should be. वो क्या करेंगे वो उनके ऊपर। Yeah. Okay. Should be okay. Abhineet. Kuldeep would be dropped, but I would have preferred Aksar to be dropped. एक बार में जवाब देने का ना भाई, आपको क्या, आपको किसको ड्रॉप करने का है? Aksar will play and Kuldeep will be dropped. No, who will you drop? I'll do the opposite. No, that's what I said. Okay. Logic versus. Finally, हम सब एक पेज पे. Yes, I will drop an Aksar. Okay, next one, please. Vyan, last 3 tests in India, when Indian team has gone in with Aksar, Jadeja, Ashwin, and Siraj as their bowling lineup, the result has been 2 losses and 1 draw. The moment the team gets Kuldeep, they win. Animesh, would you like to elaborate हम कह रहे हैं, इसीलिए तो अक्षर को ड्रॉप कर रहा हूं। तो आप प्रीवियस मैचेस के बेसिस पे ड्रॉप कर रहे हो, और जिस तरह से पाटा विकेट है वहां पर कुलदीप के पास जो कहीं ना कहीं एक वेरिएशन है वो ज्यादा हेल्प करता है, अक्षर के पास वो वेरिएशन नहीं है। He is not a prime bowler, he is an all-rounder, तो वो उस तरह से हेल्प कर सकते हैं। पर बैटिंग यहाँ पर मेरे हिसाब से ठीक है, इंडियन बैटिंग में थोड़ा सा कियोस देखने को मिला, लेकिन वो इतना स्ट्रगल जडेजा आ गया तो आपको अक्सर का वो यूटिलिटी उतना नहीं मिलेगा। एंड अगेन ऑन फ्लैट ट्रैक्स यू वुड प्रेफर टू गो विद अ रेस्ट स्पिनर हु विल गिव यू मोर परचेज देन अ फिंगर स्पिनर। और मेरे हिसाब से ये जो बैटिंग डेप्थ का अब ये जो चलता है ना लॉजिक, ये खत्म हो जाना चाहिए, तभी ऊपर वालों से रन आएंगे। अक्सर और जडेजा एक साथ टीम में बहुत कम रन देखने को मिलते हैं, जब कोई बहुत ज्यादा दिक्कत आ जाती है तो वो नहीं होगा वैसे भी मेरे हिसाब से। नहीं, टॉप 6 से तभी रन देखने को मिलेंगे जब ये बैटिंग तक खत्म हो जाएगी, जब पता होगा नीचे कोई बैटिंग करने संभालने के लिए नहीं है।
फिर शार्दुल next को one, वापस please. जाएंगे। Kuldeep, why is India giving a flat track? Are they afraid of England batting, or they don't have confidence in their domestic performers? ताउस भाई, इंग्लैंड बैटिंग से डर रहे होते तो फ्लैट थोड़ी देते भाई. वही तो फ्लैट ट्रैक। देखिए, नेचर ऑफ द विकेट है राजकोट का यार, दिस इज द नेचर ऑफ द विकेट। नहीं तो आप पहले मैच देखे हैदराबाद, इट वाज टर्निंग स्लो। फिर आप ये देखे सेकंड वाइजैक में थोड़ा बेटर विकेट था, थोड़ा स्पोर्टिंग था। दिस इज गोना बी स्पोर्टिंग। ये इतना ही फ्लैट ट्रैक नहीं हुआ है मुझे लगता है। श्रीनिवास इज सेइंग समथिंग, इतना नहीं होगा फ्लैट ट्रैक। वो धीरे धीरे ग्रेजुअली थोड़ा ब्रेक होता जाएगा। वो ब्रेक में धूप में टर्न मिलेगा अच्छा खासा। रेड सॉइल बाउंसेस यार, रेड सॉइल को बाउंस अच्छा। क्वेश्चन टेक्निकली गलत है। Why is India giving a flat track? Are they afraid of England batting? No self-respecting batting side will be afraid of a flat track. Right. So Yes. technically that question is not correct. And then they don't have the confidence in domestic performers. I would say, apropos the track, regardless of the track, that question should survive. Too much of content in that one. Okay, next one, please. Introspect. If it is a flat track, so be it. Let's be flat track bullies and score 600 plus. Vineet, टॉस जीते बगैर 600 मारेंगे. Of course do. बस एक ही बात सोचो कि एक ही बार बैटिंग करनी है. एक बार बैटिंग करनी, एग्जैक्टली. बस एक ही बार बैटिंग करनी है, बस वही सोच के चलो. ऐसा ना दोनों एक बार बैटिंग करे और 1200 रन बन जाए. टाइम जब हम खेले इस ट्रैक पे तो 600 प्लस मारे हैं, बट एक बार जाके वो बैटिंग ऑर्डर देख लो. Yes. That is also there, yeah. Okay, next one, please. वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट खेले थे ना. लास्ट टेस्ट वाज अगेंस्ट Last was West Indies. 2019 was West Indies, 2016 was England. Okay, sports fan is asking how many runs are enough for making Indian team. For Sarfaraz, it was consistent performance over 3 seasons, but in case of Particle, it was only 1 season. Animesh, ये सब तो रहेगा ही. देखिए, मैं नहीं, ये डिबेट बहुत वो है, कुछ नहीं कर सकता. वो पार्टिकल एक लेफ्ट हैंडर बैटर है, उनकी पोजीशन अलग है, सरफराज की पोजीशन अलग है, वो भी वेरी करता है. देखिए, exactly. सरफराज के लिए अभी चांस क्रिएट हो रहा है, एक सेंचुरी मार देते हैं तो उनकी कंसिस्टेंसी हालांकि बनी रहेगी. लेकिन इंडियन टीम मैनेजमेंट के साथ ये कहना मुश्किल होता है. अभी हनुमा विहारी का इसी डिबेट में हम नाम ले चुके हैं. परफॉर्मेंस करने के बाद भी चीजें नहीं होती कभी-कभी की. See, in all fairness, जिस हिसाब से लड़के ने रन मारा है बॉस, उसकी जगह तो बनती है 11. बनती तो है, बनती तो. अब यहाँ पे बेंच पे इट इज अबाउट वैकेंसी आल्सो ना. अगर 5 नंबर पे वैकेंसी है तभी बनेगा ना. अब बन रही है तो ठीक है. अभी है ना, अभी है तो अभी खिलाओ. So, एक सेंचुरी अगर सेंचुरी पार्टनर विकेट है, सब कुछ उनके लिए अच्छा है, तो अगर वो सेंचुरी मार देते हैं तो फिर मुझे लग रहा है कंसिस्टेंसी रहेगी उनके साथ. बाय दैट लॉजिक जगह भी बननी चाहिए. बाय दैट लॉजिक फिर पडिक्कल को आप पिक कैसे किए हो, कहाँ जगह बन रही है? ट्रू. ये सब क्वेश्चन आने के बाद मुझे वो करुण नायर की याद आती है. वो लास्ट जायसवाल का 300 था. नहीं, पार्टिकल तो मेरे को लग रहा है जायसवाल का बैकअप है. यही लॉजिक बनता है, ओपन और लेफ्ट हैंडर. कर्नाटका. हाँ. I will say that. Okay, next one, please. Cricket is emotion. It will be India spinners versus England spinners, which will decide the match. Your take, Srini. I will come to you for this. I don't see this being. They are also going. आज उनका 11 रिलीज हुआ. What they're going with 2 spinners, right? Hartley and two pace. No, 2 pacers, 3 spinners. Sorry. Yeah. That's it. That tells you the whole story. That tells you the whole story, and that is the reason when yesterday somebody asked me, will you see a chance of they going with Ashwin, Jaddu, Kuldeep, and Aksar, all of them? I said probably. I mean, given the reputation of the track, there's clearly no need for it. And you will go with Jadeja, Kuldeep, and Ashwin, not only because the situation demands or the conditions demand, because it is also in the given combinations that you have, this is still your best one. This is still the best that you can dish out. So probably from that aspect, you're going to, kind of this thing. But that said, I mean, तुम्हारे पास और choice नहीं है. But I am not going to give too much importance to that. Our spinners versus their spinners. The spin is not. If spin comes into play, it will be from the last session of day 4. True. Okay, next one. This will be the test for England spinners here, because their last 2 tests they've enjoyed on turning tracks. Now here
how they're going to do it's going to be a big test for them. Yeah, Vihan is saying Rohit Sharma needs to step up as a batsman. It's high time he scores. Poor South Africa series, poor and this series too. Puneet. Yeah, he has to. I mean, there have been starts as well. I mean, ठीक है, इंटेंट की आपने बहुत बात कर ली कि इंटेंट के साथ खेल रहे सारा फॉर्मेट, बट थोड़े Yeah. रन्स भी आपको चाहिए एंड देयर इज प्रेशर. आई मीन ऑन द अदर हैंड जायसवाल को देखो, लंबा एक मिस कर गया, दो खेले हैं, 87 मारा, 209 मारे हैं, उस तरह के नंबर्स आपके पास नहीं है. सो एज अ कैप्टन डेफिनेटली ही हैज टू. आई मीन, कैप्टन इज फ्रॉम द फ्रंट, ही इज द ओपनर, ही शुड लुक टू स्कोर more freely and to bat more, longer period. And that was something that we saw in that second innings. Hyderabad could not do it. It pretty much looked that he is looking to play the long haul. Nahi ho That paya, but of course, free- I completely agree with that comment that he needs to step up. It's high time. And credit to Rohit, he's done it in the past. He's done it last time when he has. England were here, he did it. When we went to England, he did it. Australia were here, he did it. So, True. Yeah. potential. Okay, last comment. Yeah. Can we have the last comment, please? Priyanshu, predict how much England will score on day one if they bat first. I say 400. Quickly, I'll take this from all of you. Srini, starting with you. Yeah. If they bat first on this track, barring Jasprit Bumrah doing something very different, very special, 300 plus, 350 के आसपास का जाएगा इंग्लैंड. On day one. Okay. Animesh, your call. Your take. You're on mute. You're not audible. बिल्कुल, ये जो कमेंट है मेरे, मैं एग्री करता हूँ कि इंग्लैंड बैटिंग आता है तो 400 प्लस जाएगा, इंडिया भी आता है तो भी जाएगा, कोई भी अगर On day one. Okay, Taus bhai. India आता है तो like 350, 300, 350 plus, because England has a very weak attack compared to when you playing in this condition. While England will score like 250, 200, 250. 250, 200 on day one. On this day kind one? of track. 300, 250, 300. India has a better attack. Okay. Bold call. Vineet. I'll take one step further. 350, Benteke scoring 100 if England bat first. Okay. I agree to Taus bhai. मेरे को भी लगता है 250 to 300. मेरे को लगा 250 पर सेशन बोल रहे. नहीं. अभी उनके पास सच में स्प्रिंग वाला बैट थोड़ी ना है. चलो, वेल अभी इस सेशन को यही एंड करेंगे. इट वाज फन चैटिंग विद यू और दोबारा मिलेंगे, दोबारा इस थर्ड टेस्ट के बारे में बात करेंगे एंड विल कनेक्ट अगेन. सो थैंक यू जेंटलमैन फॉर जॉइनिंग इन दिस सेशन. बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, बाय. फास्टेस्ट क्रिकेट स्कोर अपडेट्स या सबसे डिटेल्ड स्टैट्स, क्रिकेट के अंदर बाहर की खबरें या हेल्दी डिबेट्स, सबसे एक्यूरेट एनालिसिस या फैंस का क्रेज, सबके लिए एक ही प्लेटफॉर्म, क्योंकि क्रिकेट मतलब क्रिकेट नेक्स्ट.